देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह 8 बजे ढेकियाजुली नगर स्थित शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। उक्त श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होकर ढेकियाजुली उपजिला आयुक्त घोथिबा बोरा और ढेकियाजुली उपजिला पुलिस अधीक्षक भार्गव मणिदास ने शहीदों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के ढेकियाजुली के शहीदों को स्मरण करते हुए आज शहीद वेदी पर यह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। आज के श्रद्धांजलि समारोह में ढेकियाजुली नगरपालिका के अध्यक्ष सुष्मिता दास, ढेकियाजुली नगरपालिका की उपाध्यक्ष तुलिका शरकिया सहित कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। असम से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। এইটো গতানুগতিক অনুষ্ঠান নহয়, আবেগ জড়িত থকা এটা অনুষ্ঠান হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ আমি যিমানেই আমি উদযাপন কৰিবলৈ লওঁ, প্ৰতিবাৰে এই আবেগবোৰে আমাক সদায় জুমুৰি থাকিব আৰু তেখেতসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদান আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিন বুলি নহয়, আমি সদায় স্মৰণ কৰি থাকিম। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আজি স্বাধীনতা দিৱস। এই স্বাধীনতা দিৱসত আমি 1942 চনৰ যিসকল আমাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ত্যাগবীৰ আছিল, তেখেতলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে আমাৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত, আৰু সমজিলা আয়ুক্তৰ লগত মই সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে তেখেতক মই সংগ দিছোঁ, আৰু মই সমূহ ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই স্বাধীনতা উপলক্ষে, যাতে সকলোৱে ওলাই আহি সহযোগিতাৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে।